Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. For today's lesson, the resources you need is English Book 2, Class 2, Chapter 3, Lecture 2. So the name of the unit is The Cow. It's a poem about cow. It's on page number 15. By the end of this lesson, the student will be able to recognize that a sentence ends with some form of punctuation. For example, full stop and question mark or an exclamation mark. For the class task, please open your textbook page 18 and 19. हम पेज 18 का क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला पार्ट करेंगे. Use capital letters, full stop and question mark where required. A. The bus started its journey from Multan to Lahore. हमने क्या करना है सेंटेंस में? कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, फुल स्टॉप लिखना है और क्वेश्चन मार्क डालना है अगर एक सवाल है. So we remember that every sentence starts with a capital letter. The bus started its journey from Multan to Lahore. मुल्तान और लाहौर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, इसलिए इनको हम कैपिटल में लिखेंगे. मुल्तान एंड लाहौर. आपने ये सेंटेंस दोबारा लिखना है इस लाइन के ऊपर. And there is going to be a full stop in the end. Number 2. The capital of Pakistan is Islamabad. The को कैपिटल होना चाहिए, प को कैपिटल होना चाहिए, ई को कैपिटल होना चाहिए और एक फुल स्टॉप होना चाहिए बिकॉज ये सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो गया. सो आप इसको दोबारा लिखेंगे. The capital of Pakistan is Islamabad. और फिर एक full stop in the end. Part C. What is your age? आपकी उम्र क्या है? This is a question. और question mark आता है हर सवाल के एंड पे और सेंटेंस कैपिटल से शुरू होता है. What is your age? सवाल या निशान. D. Ali, Shahid and Sameer are my friends. Ali, Shahid and Sameer ये तीनों नाम हैं. उनका पहला लेटर कैपिटल होगा. Ali, Shahid and Sameer are my friends. और एंड पे फुल स्टॉप. Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? सवाल कैपिटल लेटर से शुरू किया. Where are you going? और हर सवाल के एंड पे आता है सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क. और क्लास टास्क स्केल के बाद आपने इस यूनिट को रीड करना है और इसमें मौजूद फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क को सर्कल करना है. Now it's time for workbook page number 15 as a class practice. Question 5. Take help from your siblings and use capital letter and full stop in the given sentences. Also, use question mark at the end of a question statements. Then write them below. Number 1. I live in Lahore. Number 2. Where do you live? 3. Lahore is the capital city of Punjab. I को कैपिटल होना चाहिए,
लाहौर को कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस के एंड पे एक फुल स्टॉप। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? W capital, full stop in the end. Lahore is the capital city of Punjab. The letter L for Lahore should be capital because it's the start of the sentence. P, capital of Punjab, and there must be a full stop at the end. और आप इन sentences को इन lines पे दोबारा लिखेंगे। I live in Lahore. Full stop. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? सवालिया निशान। Lahore is the capital of Punjab. Full stop. होम टास्क के लिए समर पैक पेज नंबर 20 पे आपके लिए एक एक्टिविटी मौजूद है। Question 5 says find the comma. Question 6 says pick the question mark. Question 7 says identify the sentence. Or there is an activity on page number 20. Identify punctuation marks and make sentences using them below. इस पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने सेंटेंसेस यहाँ पे बनाने हैं। Find and underline all the punctuation marks from the unit. Please do not forget to do your homework before the next lesson. Read the unit before coming for the next class. Until then, take care of yourself and your family. See you soon. Allah Hafiz.